Hello everyone, very good morning to all of you. Okay, तो चलନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତା ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, 5 minutes ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା and I really apologize for that thing and please ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଟିକେ ସେୟାର ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ କର and କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ କ୍ଲାସ୍ ଟାକୁ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କର। ଓକେ, डरलाती फिर भी यार क्या करें। एक सेकंड यार, एक सेकंड, give me 1 second, give me 1 second, just give me 1 second more. Okay. ଆଜିର क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस रे तुमको स्वागत। ओके, देखो एमसीक्यू का बाप। ओके, दम है तो करके दिखा। ओके, तो चलନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଟି ଭଲ ହବ, ବହୁତ ଭଲ ହବ, ତାଠୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ହବ। ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ କିଛି ଅଣାଯାଇଛି ହେଲା, ତା ସହିତ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ସହିତ ତା ସହିତ ଆମର କିଛି ଜିଏସ୍ ସବଜେକ୍ଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ଅଣାଯାଇଛି ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ ର। ତ କେମିତି କିଏ କଣ କରୁଥିବ ଦେଖିବା। ଓକେ, ଦେଖିବା ଚାଲ। ତା ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଥିଲେ ଆମର टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर दो सो दैट यू विल गेट फ्री पीडीएफ एंड ता सहित यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दियो हमरो। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट बा सफलता मिलबो ही मिलबो आ मु सफल हो जाउची। इट इज आवर कोर थीम ऑफ टुडे। ओके, आज रो थीम हो जेडा सफलता मिलबो ही मिलबो। ओके, तो समस्त को अनुरोध प्लीज टिके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दियो एंड जॉइन करो जल्दी। ओके, अच्छा एटा आंसर दो तो मुझे शेयर कर दो। देखो, who was honored with the Padma Shri for her role in Goa's liberation struggle in January 2025। कौन रहिबो करंट अफेयर्स पिला माने? करंट अफेयर्स रे क्वेश्चन रा एटा है ना, करंट अफेयर्स रे क्वेश्चन पिला माने आज रे करंट अफेयर्स बहुत माने बढ़िया क्वेश्चन आना जाइछि। ओके, जेतु आगु सेंट्रल गवर्नमेंट रो माने रेलवे भी मन पई भी प्रिपेयर हो, सीजीएल पई भी जो माने प्रिपेयर हो, से मानो पई भी हेल्प नहीं जो करंट अफेयर्स बहुत डाइवर्स है आज रो। ओके, तो समस्त अनुरोध प्लीज टिके लाइक एंड सब्सक्राइब कर दियो एंड शेयर बो टिके करो। ओके, चलो देखो 1 minute टिके आओ, just give me 1 second more. ओके, 1 minute more। आई होप कि समझते टिके वेट कर दे। ओके, ओके चलो। ओके देखो, हु वाज ऑनर्ड विद द पद्मश्री फॉर हर रोल इन गोवास लिबरेशन। ओके देखो क्वेश्चन देखो कौन रहला पिला क्वेश्चन आ जगह रे ना काहा को ऑनर ऊपर दे पद्मश्री अवार्ड दिया जायछि इन द रोल ऑफ गोवास लिबरलाइजेशन। ओके, गोवा लिबरलाइजेशन स्ट्रगल पे काहा को से पद्मश्री अवार्ड दे जनवरी 2025 कोन लिबिया लोबो सरदेसाई एंड बकन बम बमान सरदेसाई एंड पवनीर सिंह एंड देखिबा अंटोनियो सालाजार। ओके, देखिबा कौन रहो राइट आंसर। ओके, व्हाट इज द राइट आंसर? देखो राइट आंसर लिबिया लोबो एंड सरदेसाई, लिबिया लोबो सरदेसाई है राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट एज फॉर द वर्ल्ड बैंक जीईपी, as per the World Bank GEP January 2025 report, which Indian sector is witnessing revitalization due to logistic improvements and tax system reforms? कौन? एग्रीकल्चर, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, करंट अफेयर्स। ओके, ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन पिला है ना, मैन्युफैक्चरिंग एजुकेशन कौन रहबो पिला माने? एज पर द वर्ल्ड बैंक जीईपी जनवरी 2025 रिपोर्ट, व्हिच इंडियन सेक्टर इज विटनेसिंग है ना रिविटलाइजेशन ड्यू टू लॉजिस्टिक इम्प्रूवमेंट एंड टैक्स सिस्टम रिफॉर्म। और वही पर राइट आंसर देखो, राइट आंसर हम देखो इट इज मैन्युफैक्चरिंग हो राइट आंसर। कौन रहबो? मैन्युफैक्चरिंग इज राइट आंसर हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग। ओके, एटा करंट अफेयर्स पिला माने ला मन तो which state has the largest forest and tree cover area wise as per the Indian state of forest report 2023। ओके है ना,
Pranam Mandari. Okay. Which state has the largest forest and tree cover area wise as for the Indian State Forest Report? India State Forest Report ଅନୁଯାୟୀ କଣ ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା है ना এটা 2 ବର୍ଷ ମୁଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଧରି ଚାଲିଛି ଯେହେତୁ ସେଇଟା ପଚାରୁଛି ଓକେ ୱିଥ୍ ଆଚ୍ଛା ଏଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଇଟା ଏ ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଏ ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ 2025 ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ହେଲା ହେଲା देखो इट इज एमपी बहुत बढ़िया एमपी इज राइट आंसर मध्य प्रदेश इज राइट आंसर है मध्य प्रदेश नहीं जीवा हु ओन द वुमेन सिंगल टाइटल एट 2024 कौन सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट ओके है ना कौन रहिबो हु ओन द वुमेन सिंगल टाइटल 2024 दैट सैयद मोहम्मद इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट ओके है ना सनी मीरा एंड देखिबा मालविका बोनसूद एंड कार्लोनिया एंड मॉरिन एंड पीबी सिंधु सुनील ऑप्शन 4 ही बहुत बढ़िया पीवी सिंधु इज राइट आंसर ओके पीवी सिंधु बहुत बढ़िया पीवी सिंधु इज राइट आंसर ओके नेक्स्ट जीवा वेयर डिड द टाइगर जंप 2025 एक्सरसाइज यू नो कमेंट्स ओके देखो ए एक्सरसाइज टा है ना এটা মিলিটারি এক্সরসাইজ নেভাল এক্সরসাইজ এয়ার এক্সরসাইজ যে তিনটা রହୁଛି ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ এটা which where did the tiger trump 2025 exercise comments okay comments देखो हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स वेस्ट बंगाल नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम नेवल डॉक कोची चेन्नई पोर्ट कोडी अच्छा ऑप्शन 2 यस विशाखापट्टनम इज राइट आंसर बहुत बढ़िया सुनील ओके ऑप्शन 2 इज राइट आंसर ऑप्शन 2 इज राइट आंसर है ऑप्शन 2 इज राइट आंसर ओके नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम जो मैंने देखलो बहुत बढ़िया नेक्स्ट जीवा जनवरी 2025 हु अमंग द फॉलोइंग चेयर द फर्स्ट एवर सीएसआर राउंड टेबल फॉर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ओके कौन रहिबो ओके 2025 जनवरी हु अमंग द फॉलोइंग चेयर द फर्स्ट एवर सीएसआर राउंड टेबल फॉर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट नरेंद्र मोदी मुकेश मांडविय एंड देखिए अनुराग ठाकुर ओम बिरला सुनील एंड मंजरी देखो आसु न आसु किसी असुविधा नहीं आंसर दो चेष्टा कर आंसर दियो ओके आज क्वेश्चन बाप लेवल क्वेश्चन है देखो दम है तो करके दिखा ओके सेटा आज थीम तो चेष्टा करो डरो नहीं रुह कंसिस्टेंटली जी आज कंसिस्टेंट रहीगला देन मुझे आगु बढ़ जाओ ओके मुकेश मांडविय इज राइट आंसर ऑप्शन 2 इज राइट आंसर बहुत बढ़िया सुनील मंजरी ओके ऑप्शन 2 इज राइट आंसर मुकेश सॉरी मुकेश सुनील मनसुख मांडविय ओके मनसुख मांडविय ओके मनसुख मुकेश को दिली सॉरी मनसुख ओके who clinched the under 18 world cadre chess championship title 2024 ओके मतलब अंडर 8 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2000 टाइटल किए पाइथिला है ना दिवित रेड्डी आदित्य मित्तल एंड खाविश पालनी कौन पालनी पान एंड रौनक सधवानी चलो मंजूर सुनील कौन हो राइट आंसर आर दियो जल्दी जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो कौन हो राइट आंसर ओके तो मधु आंसर टा कहि दो राइट आंसर हाँ दिवित रेड्डी है दिवित रेड्डी ऑप्शन कौन रही है ऑप्शन 1 रही दिवित रेड्डी ऑप्शन 1 इज राइट आंसर है देखो नेक्स्ट जीवा हु बेग द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर द 70th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड देखो मु काली कहली फिल्म फेयर अवार्ड काना पदिन करथि बोले है ना द बेग हु बेग द बेस्ट एक्टर अवार्ड 70th नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 ओके डालिकुर सलेमान एंड आयुष्मान खुराना अल्लू अर्जुन ऋषभ शेट्टी देखो केतिकी वेटेज रही जो अवार्ड्स गुडा खास कर फिल्म अवार्ड्स रो भी पचार जगह ओके सो कौन रहिबो राइट आंसर पिला माने दबा के आंसर दो जल्दी जल्दी आंसर दो आज क्लास टी में भी लंबा होई पारे ओके ऋषभ शेट्टी इज राइट आंसर ऋषभ शेट्टी इज ला एबे मध्ये ऋषभ शेट्टी ही असन के ना कोन ना ना और कोन पाइछन ओके ऋषभ शेट्टी ओके नेक्स्ट जीवा April 2025 who addressed the inaugural West Coast of पोषण पोषण ना पाखुड़ा पोषण पाखुड़ा 2024 ओके 2000 April 2025 who addressed the inaugural webcast of पोषण पाखुड़ा ओके 2025 किए रहिबो अरुणा देवी डॉक्टर मनसुख मांडविय एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सावित्री ठाकुर कौन रहिबो पिला राइट आंसर जो देखिए आंसर दियो जल्दी जल्दी आंसर आसु न आसु यार पार्टिसिपेट करो है ना जो मर डर गया वो सो मर गया ओके तो मरने का नहीं ये ना ही डरने का ओके देखो राइट आंसर पिला सावित्री ठाकुर रहिबो राइट आंसर ओके कौन सावित्री ठाकुर ओके नेक्स्ट बा अंडर इट्स न्यू फॉर्मेट हाउ मेनी टर्म्स प्रैक्टिस्ड इन 2025 फीफा कप you know club world cup okay कौन रहिबो अंडर इट्स न्यू फॉर्मेट हाउ मेनी टीम्स पार्टिसिपेट इन 2025 फीफा क्लब वर्ल्ड कप है ना
24 36 28 एंड 32 32 सुनील करंट अफेयर्स के किए स्ट्रांग होल्ड अच्छे आज जना पड़ जाओ ओके देखो 32 इज राइट आंसर बहुत बढ़िया सुनील बहुत बढ़िया है ना बहुत बढ़िया मेहनत कर दो एमती बढ़ी चलो आगू जीती जो डेफिनेटली ओके नहीं देखो जो स्त्री समिट 2025 ओके स्त्री समिट 2000 फोकसिंग ऑन वुमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट वाज हेल्ड इन व्हिच इंडियन स्टेट भोपाल हैदराबाद लखनऊ मुंबई ओके अच्छा सुनील तुम करंट अफेयर्स सोर्स टी पिला कह दियो को जगह तुम करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो सो दैट बहुत बढ़िया एक्यूरेटली आंसर दो ओके Three Summit 2025 focusing on women's safety and empowerment was held in which Indian city? Bhopal, Hyderabad, Lucknow, Mumbai. Hyderabad is the right answer. Okay, Hyderabad. Hyderabad. Manohar Joshi, है ना, posthumous received the Padma Bhushan for his contribution to which field? Okay, मनोहर जोशी कंट्रीब्यूशन पद्म भूषण पाइछन को फील्ड रे कंट्रीब्यूट ताकर अधिक कंट्रीब्यूशन अधिक अछि ना सोशल वर्क पब्लिक अफेयर्स मेडिसिन एंड ट्रेड इन इंडस्ट्री ओके कौन रहबो पिला माने ए करंट अफेयर्स क्वेश्चन जाको न दे परियो कोडा दे परियो ओके तो देखो मनोहर जोशी रिसीव द पद्म भूषण फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू व्हिच फील्ड सोशल वर्क पब्लिक अफेयर मेडिसिन ट्रेड इन इंडस्ट्री सुनील एंड मंदरी देखो राइट पब्लिक अफेयर्स इज राइट आंसर पब्लिक अफेयर्स ओके पब्लिक अफेयर्स हम है ना पब्लिक अफेयर्स मन मिलथियो का मनोहर जोशी को पब्लिक अफेयर्स बोली पद्म भूषण अवार्ड मिलछि ओके नहीं देखो हु वाज अपॉइंटेड द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ओके इन मे अच्छा एटा भी करथले 5 7 दिन तले बोधे सेक्रेटरी टू द रेवेन्यू है ना सेक्रेटरी जे रेवेन्यू 2025 अपॉइंट होजन मे मास रे कौन रहबे तांकर नाड राजेश कुमार राजीव गौबा अरविंद कौन श्रीवास्तव एंड अनुराधा शर्मा कौन रही पारे सुनील मंजरी माने मेडिसिन रे पाइछन नो यार मेडिसिन नहीं ओके अरविंद यस अरविंद देखियो यस अरविंद श्रीवास्तव बहुत बढ़िया मंजरी बहुत बढ़िया अरविंद श्रीवास्तव इज राइट आंसर अरविंद श्रीवास्तव इज राइट आंसर ओके India ranked dash out of 33 country in just free speech index according to the global survey report published in 2025 by the future of free speech and independent US based think tank अच्छा देखो इंडेक्स रैंकिंग रो क्वेश्चन बोते मु करैथिली हो ना नहीं तो फ्री स्पीच रो बोते करा जायतिला तो कोन रहइबो राइट आंसर आउट ऑफ 33 कंट्रीज इंडिया रैंक ओके कोन रहइबो 24 29 12 18 कोन रहइबो मंजरी एंड सुनील बोथ ऑफ यू प्लीज पार्टिसिपेट इन क्लास एंड आंसर दियो कोन रहइबो 29 देखिए 24 29 ओके इट इज 24 बहुत बड़ा मंदरी सुनील इट इज 24 होबो ओके इट इज 24 होबो हला मन रख दो 24 समय हला देखो इंडिया रैंक आउट ऑफ इंडिया 24 आउट ऑफ 36 कंट्रीज 2025 रे अकॉर्डिंग टू ग्लोबल सर्वे रिपोर्ट ओके हला कोन फ्यूचर फॉर स्पीच फ्री स्पीच ओके नै दिवा which Pacific island country dependent its diplomatic and economic ties with China through a strategic partner in February 2025 leading to highlighted concerns in New Zealand okay Tonga Soma Fiji Cook Islands okay कौन रहिलो क्वेश्चन ता बोला बुझो which Pacific island country depend its diplomatic and economic ties with China को आइलैंड कंट्री अछि तार डिप्लोमेटिक हो कि इकोनॉमिकल टाई जहां से तो चाइना से से डिपेंड अछि तो एंड थर्ड स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप बोलते ता से साइन करछि तो को कंट्री से हला है ना हाईलाइट इन कंसर्न टू न्यूजीलैंड ओके कंसर्न का से तो अछि न्यूजीलैंड से तार फिजी नो एटा कुक आइलैंड है ऑप्शन 4 हला कुक आइलैंड ओके ऑप्शन 4 कुक आइलैंड है ओके सुनील कुक आइलैंड ओके कुक आइलैंड हो राइट आंसर मन रखला एजा कहीं के मन रखतो कारण एटा रिसेंट डेवलपमेंट गुडा सेला व्हिच गवर्नमेंटल बॉडी इज रिस्पांसिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द डीप ओशन मिशन इन 2025 ओके देखो गवर्नमेंट बॉडी गुट अछि जोटा कि रिस्पांसिबल फॉर अछि डीप सी मिशन पे 2025 इंडिया रो कोडा रहबो पिला माने ओके सुनील एंड मंदरी हां नीति आयोग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अर्थ साइंस आई इसरो ओके को हमरो बॉडी अछि इंडिया रो जोटा डीप सी मिशन 2025 एग्जीक्यूट कर जे कोन रहबो राइट आंसर इंडिया रो डीप सी मिशन ओके आ से तार नाडा भी कहि दो वाला से डीप सी मिशन रो नाडा भी कहि दो इंडिया रो कोन से दोछि
राइट आंसर है और साइंस ओके बहुत मिनिस्ट्री ऑफ और साइंस बहुत बड़ा मंजरी ओके मिनिस्ट्री ऑफ और साइंस इज राइट आंसर सुनील ओके पछ गुंता दियो ना आंसर दियो समस्त बहुत बढ़िया फोर केमते हो यार मिनिस्ट्री ऑफ और साइंस ओके व्हेन इज 7th एडिशन ऑफ पोषण पाखोड़ा फाकोड़ा ऑब्जर्व इन 2025 ओके कोन 7th एडिशन पोषण पकोड़ा पकोड़ा कहि दोती ना पाखुड़ा हला पोषण पाखुड़ा इज ऑब्जर्व इन 2025 ओके 10 मार्च टू 25 मार्च एंड 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल 8 अप्रैल टू 22 अप्रैल 5 अप्रैल टू 20 अप्रैल हाँ 20 अप्रैल देखो राइट आंसर पिला मैंने 8 अप्रैल टू 22 अप्रैल रहो ना 8 अप्रैल टू 22 अप्रैल यस बहुत बढ़िया 8 अप्रैल टू 22 अप्रैल इज राइट आंसर ओके मंदरी बहुत बढ़िया पार्टी आज मंदिर बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन रोजी बहुत बढ़िया मंदिर इमती आगो बढ़ी चलो ना देखो एज ऑफ मार्च 2025 फर्स्ट मार्च फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम FTI TTF has been implemented at how many major airports in India uh, where if a traveler has already filled in all the requirement information, the screening process is completed in just 30 seconds. Okay. अच्छा एक क्वेश्चन मु भाबुदी बहुत पिला को जाना नथियो तथे मु मोर राइट आंसर ता कहि देबी है ना देखो फास्ट मैथ फास्ट ट्रैक ए जो रहिला एंड इंप्लीमेंटेड करा जायतला हाउ मेनी मेजर एयरपोर्ट केतरा मेजर एयरपोर्ट रे ए जिंस को एडॉप्ट करा जायतला देखो क्वेश्चन टा रहउची ई जगह हैला क्वेश्चन टा तम रहिला हैला आ तम जदी एतो क्वेश्चन देखि छानी आबो ना कोन कर हैला देखो राइट आंसर केते रहबो 8 8 होला 8 ठी के मन रखि तो 8 ठी हैला as mentioned in the economic survey 2025 what is the projected growth rate of financial year 2025 okay agriculture sector रे okay देखो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 जून रे एग्रीकल्चर सेक्टर रे केते प्रोजेक्ट करा जायछि अर्थात प्रेडिक्ट करा जायछि कि एकति की ग्रोथ हबो बोली 4.0 4.5 4.8 3 सॉरी 3.8 3.2 3.5 4.0 कोन रहि पारे देखो 83.8% ला 3.8% इज राइट आंसर माने 3.8 देछो इज राइट आंसर देछो हला 3.8 इज राइट आंसर ओके नेक्स्ट बा where where two new jumping spider species identified in India 2025 ओके देखो को जगह रे पाइछ दीटा नुवा जंपिंग स्पाइडर स्पीसीज आइडेंटिफाई करा जायछि 2025 रे वेस्टर्न घाट डेक्कन प्लेट्यू निकोबार आइलैंड्स ग्रेटर हिमालय ओके को जगह दीटा नुवा स्पाइडर स्पीसीज जोडा जंपिंग स्पाइडर छोट छोट होइथांती हाँ से गुडा फाउंड करा जायछि कोन रहइबो मंजरी एंड सुनियन प्लीज समस्त अनुरोध प्लीज टिके लाइक टिके शेयर टिके सब्सक्राइब कर दियो सो दैट कि हमर भी हेल्पफुल जे तुमर भी हेल्पफुल होई जो ओके वेस्टर्न घाट अच्छा यस वेस्टर्न घाट वाला वेस्टर्न घाट बहुत बड़ा मंदिर है ना वेस्टर्न घाट बहुत बड़ा मंदिर है बहुत बड़ा आंसर दोछंती सुनील एजल ओके तो एही प्रकार आंसर दियो भाई माने गुणी माने समस्त को अनुरोध एंड व्हिच सुप्रीम कोर्ट केस रूल्ड दैट हार्मोनी मस्ट बी मेंटेन अच्छा जीएस क्वेश्चन आला करंट अफेयर्स वाला ओके आ तो करंट अफेयर्स पछरा थी हला which Supreme Court case ruled that harmony must be maintained between fundamental rights and directive principle of state policy. Mindus Bamilis case was Union of India 1980. Golkanand case versus Punjab and the Indira Swani case was Union India and the state of Madras was Champakam Ana the region. कौन रहेगा? अच्छा इधर भी हम कोई दूसरी ऑप्शन है yes Minruba Milis case and Union of India okay. Minruba Milis 1980 is right answer है Minruba Milis case and Union of India है ସେଇଟା କଣ ରହୁଛି Supreme Court ruled that harmony must be maintained between fundamental rights and directive principles of state policy okay है ना the first issue of the weekly paper है ना Horizon by Mahatma Gandhi है ना देखो first use issue प्रथम issue कहते weekly newspaper गोटे कौन था ना Horizon এই प्रकार क्वेश्चन देखि दो पिला माने Horizon by Mahatma Gandhi was published on केबे पब्लिश कराइतला 18 फरवरी 1932 11 फरवरी 1933 एंड देखिए 11 जनवरी 1933 11 जनवरी 1930 ओके এই প্রকার क्वेश्चन तो मु भाबुजी तुम प्राय देखि न थाई परला को जगह रे एग्जाम देला बेले प्राय देखि न थाई परला कोन फर्स्ट इश्यू ऑफ वीकली न्यूज़पेपर हॉरिजन बाय द महात्मा गांधी वाज पब्लिश्ड अच्छा that is okay second is 11 February 1933 yes बहुत बड़ा 11 February 1933 is the right answer 11 February 1933 is the right answer next बा
अच्छा एटा टिके क्वेश्चन टा टिके लेंदी रहबो हमते दुईटा क्वेश्चन आना जायछि हां करियो ना स्किप कर दो तब हम पढ़ दो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन इंडिया आर करेक्ट हला जोटा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन रहिछि जोटा कि इंडिया को अफेक्ट करो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जोटा कि पुनी वर्षा प्रभाव करे ता भितरु एटा कोडा करेक्ट हे पाए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन इंडिया जनरली डेवलप्ड ओवर द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल and especially during the southwest monsoon season. And some tropical cyclones also occur during the retreating monsoon or winter monsoon. And the southern disturbance originated over the Bay of Bengal and bringing heavy rainfall to South India. Western disturbances are associated with summer rainfall and drought in the northern part of India, especially the western Himalayas. Okay, कौन रहेगा 1 2 3 ठीक अच्छी अच्छा 1 and 4 ठीक अच्छे 1 2 ठीक अच्छे 2 4 अच्छा मैं आराम से कही दूसरी रेटिंग ग्लोबल लेवल क्वेश्चन है 1 and 2 है 1 नंबर कौन दीजिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन इंडिया जनरली डेवलप ओवर द अरेबियन सी रे हुए साइक्लोन इन जनरल को जगह हुए हमर इंडियन ओशन अरेबियन सी ने बे ऑफ बंगाल रे हुए यस साउदर्न मॉनसून जेतो हिट करे से समर हुए फोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एसोसिएटेड विद समर रेनफॉल ओके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ना जो कौन को दी कालो वैसे ना कौन सी टाइम ना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एसोसिएटेड विद समर रेनफॉल drought and in the south northern part of India and especially western Himalaya. Okay, 1 and 2 होला sorry 1 and 2 होला sorry 4 कोई दिल 1 and 2 होला एटा हबनी होला one some tropical cyclones are occurred during the retreating monsoon winter month. Okay, ମୁଁ ବି confuse ହେଇ କରୁଥିଲି ହେଲା ଦେଖ right answer 1 and 2 ହେଲା ଦେଖ which forest type is in India being described as on the following characteristics. Okay, the forest type को type of forest देखने को मिलती है described based on the following characteristic. Okay, कौन found in region that receive about 100 cm of rainfall annually from October December which temperature अच्छा मैं इधर skip कर दूँ चलो एक क्वेश्चन skip कर दे आंसर टा साधारण tropical die have evergreen forest है लाइट skip कर दी नेक्स्ट जीवा which of the following rights has not been interpreted as part of the Article 21 by the Supreme Court है ना कौन रही बड़ा मंदिर ने सुनिल which part which of the following right has not been interpreted. Okay, not been interrupted as part of Article 21 by the Supreme Court. Right to shelter, privacy, right to vote, right to marry. आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 विषय कहि दोछि एथिरे बहुत गुडा लॉ अछि ला मन ने आर्टिकल 21 रे एथिरे बहुत किछि अछि ला बहुत गुडा राइट्स अछि तो सेही गुडा को भीतर कोडा रहि पारे इट इज हला इटा राइट नॉट इन राइट टू वोट इट इज सेपरेट अछि तो आ भीतर आसीबो नाही हला एटा राइट आंसर आवर राइट आंसर इटा राइट टू वोट हला राइट टू वोट ओके ने जिबा कि the coastal stretch of the eastern coastal plain located between the Mahanadi and the Krishna River is referred to as the dash. Okay, the coastal stretch of the Eastern Ghat Plain. Coastal stretch of Eastern Ghat Plain located between Mahanadi and the Krishna River is referred as to Coromandel Coast, Northern Sikaras, ଆମର ମାରାବାର କୋଷ୍ଟ and କୋଙ୍କଣ କୋଷ୍ଟ କଣ କୁହାଯିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ଓକେ ଏଇଟା ବହୁତ ଥର କରାଯାଇଛି ଅପସନ 2 କରମଣ୍ଡଳ କୋଷ୍ଟ ହବନି ମାଲାବାର ହବନି କୋଙ୍କଣ ହବନି ଗୋଟା ହିଁ ହବ ଓକେ ନର୍ଦର୍ନ ସିକାରସ୍ କୋଷ୍ଟ ଓକେ ବହୁତ ବଢିଆ ନର୍ଦର୍ନ ସିକାରସ୍ କୋଷ୍ଟ ఇది କୁହାଯାଏ ଓକେ ବହୁତ ବଢିଆ ନେକ୍ସଟ ଯିବା which island is mentioned as the largest inhabited riverine island in the world है ना को आइलैंड टेक को गोटे आइलैंड एमती अच्छी जोटा मेंशन कर लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड ओके है ना इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड कोडा मजुली श्रीलंका अंडमान एंड लक्षद्वीप हाँ आउ गोटे कौन आइलैंड माने कौन बोलते रिवराइन आइलैंड लिखाई है रिवराइन है ना रिवर आइलैंड जो लोक बसवास कर रिवर रिवर आइलैंड ओके मजुली आइलैंड बहुत बढ़िया मजुली इज राइट आंसर मजुली इज रिवर आइलैंड है ना लार्जेस्ट इनहेबिटेड आइलैंड मजुली रिवर आइलैंड क्वेश्चन एटा बुले पता दिन राइट आंसर दे व्हाट विजन एंड मेन एम डिड इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज possesses ओके कौन देखा द विजन एंड मेन एम कौन होची इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज possesses okay to attend है ना decentralized and participatory local self government through public in panchayat raj institutions to centralize planning and governance to implement national rural development model to regulate panchayat raj finances okay
देखो मेन जिन सब कि ऑप्शन ए हम है ऑप्शन ए हम टू अटेन डिसेंट्रलाइज एंड पार्टिसिपेटरी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइज कौन हो सेंट्रलाइज अर्थ हो सेंट्रल बसिक सेंट्रल स्टेट एंड हूँ लोकल लेवल है मन रखते लोकल लेवल ओके जदि केन्द्र जगह लोकल लोग कंट्रोल कर जगह कंट्रोल कर असुविधा हो ना नहीं तो स्टेट स्टेट पर लोकल लोकल को इंडिपेंडेंट कर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन गठन कर सो दैट कि निजर डिसीजन निजे नहीं पारे रीजनल लेवल ओके ऑप्शन वन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज एसोसिएटेड विद द मैत्रिका डायनेस्टी ओके मैत्रिका डायनेस्टी को रूलर वाज एसोसिएटेड विद द मैत्रिका डायनेस्टी ओके नरसिंह वर्मन कौन वासु ध्रुवसेन द्वितीय एंड अजात शत्रु एंड मिहिर कूल कौन रही राइट आंसर मंजर इंडे सुनील है ना ध्रुवसेन द्वितीय है ध्रुवसेन द्वितीय राइट आंसर देखो गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग आर्य समाज आ भितर कोडा ठीक अछि है ना करेक्ट करेक्ट कोडा आर्य समाज है ना इट वाज एसेंशियली ए कंजर्वेटिव मूवमेंट दैट ऑफर्ड कास्ट बेस्ड सोशल हायरार्की and देखिबा it supported ideal worship it promoted the revival of ritualistic Hinduism akin to that of Puranic tradition it started the Shuddhi movement जाइनी एई सार माने कौन लिखिले दिल्ली पुलिस मैं पूछी डिसेंबर 16 रे व्हीकल मेंटेनेंस क्वेश्चन नीड थिला दिल्ली पुलिस ड्राइवर एग्जाम अछि मोरो डिसेंबर 16 रे व्हीकल मेंटेनेंस क्वेश्चन नीड थिला अच्छा हो तुम ये मते रिमाइंड कर दो व्हाट्सएप मेसेज करी मु सेरे तुमको पठा दी ओके ओनली फोर कौन देछि ओनली फोर देछि इट स्टार्टेड द सुधी मूवमेंट है ना which of the following policy replaced the foreign exchange regulatory act okay FERA during the economic reform in the Indian economy है ना अच्छा सुनील यही क्वेश्चन वाला तुम आंसर दे पारतो कारण एटा तो सेंट्रल लेवल क्वेश्चन दिल्ली पुलिस लेवल क्वेश्चन है ना काल ना परदिन को दिल्ली पुलिस क्लास करैथली क्लास मैंने कोन की से जगह रे एमसीक्यू डिस्कस करैथली काल ना परदिन दिल्ली पुलिस रो क्वेश्चन आनथली है ना सीपीओ रो तो मु होछि आंसर तो काय पार्टिसिपेट करलोनी बोल तुम सीतार अच्छा मु आज चेष्टा करछि इवनिंग रे आनिबा ओके देखो राइट आंसर कौन रहबो राइट आंसर आर कौन रहबो एफआईएमसी देखो कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज रिप्लेस द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट ओके एफईआरए को पॉलिसी रिप्लेस करे ओके देखो राइट आंसर होबो एफईएमए ओके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ओके मन रखो व्हाट इज द folk dance of the northeastern state of Mizoram called okay तो folk dance गोटे प्रैक्टिस करे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रे मिजोराम रे कौन कुआ जाय सेटा कोना होजागिरी है ना चेरवा एंड टांगते कारवा कौन रे प्रैक्टिस जे प्रोनाउंस होनी एंड सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन एंड कौन रहबो राइट आंसर ओके सुनील एंड बंजरी सेंट्रल लेवल क्वेश्चन गुडा कोइ जागा कहला एमती नै कि हल्का लेवल रहला समस्त दे परिबे धी क्वेश्चन गुडा को माने टिके कोन समस्त दे परिबे माने कोन कि निजर सेल्फ विल गुटे थाइ कि ना मु दे परिबे ना समस्त दे परिबे है ना बहुत पिला एमती अछन तो टिके देखि स्किप हे यार भाई देखो ना तो वीडियो तो देखिया कोन छै सेति स्ट्रेंथन करे है ना नेक्स्ट देखो which strategic disadvancement in the aviation sector marked the significant move in the Indian government's privatization efforts in the 21st century? किए कोई पर राइट आंसर है ना strategic disadvancement in the aviation sector marked a significant move in the Indian government privatization efforts in the 21st century है ना नारायण नायक मोर आरआई मार्क 76.33 मीन्स हबो कि हबो अच्छा आ गोटे क्षमा करो गोटे कथाटे पचारछि तमर ओबीसी एससी एसटी जनरल को कैटेगरी रे जाए अच्छा कटाकटी हेकि रेति आछि ना कटाकटी न हेकि रेति आछि मते को आगे हैला ओके
राइट आंसर कौन मर्ज ऑफ इंडियन एयरलाइंस विथ एयर इंडिया है The term reform with human face and reforms with a human face in India economics refer to which of the following? Okay, trade first strategy, equality focus, liberalization, state monopoly in welfare, growth prioritize over inclusion. कौन रहेगा? नारायण नाहक. ओके नारायण अरे यार तुम्हें कहू तो दे एससीबीसी रो मार्क अच्छा एससीबीसी रो मार्क एति कटाकटी हेई जाईची ना तुम्हें डायरेक्ट जति मार्क अटेंड करले एति माइनस मार्किंग करी करछ ना जदि एससीबीसी रख देन सेटा हेई जो हला व्हिच आई एक्सपेक्ट कि एससीबीसी कैटेगरी जाउ तो जोटा कि ओबीसी कैटेगरी देन हेई जो है ना फेथ रखो हेई जो डेफिनेटली ओके बेसी जीवन हस्ती नंबर भीतर जीव मत लागला जनरल कैटेगरी 85 भीतर जाई पारे 85 टू 70 भितरे ओबीसी जनरल कैटेगरी रो ताठु ती तळुकु जदी जीव आमे हमर ओबीसी कैटेगरी रो ताठु टिके तळु जे माने ये जो आरआई कंफर्म हे जो हां डेफिनेटली हे जो नारायण हगा नारायण डेफिनेटली कंफर्म हे जो ओके ने देखो इक्वालिटी फोकस लिबरलाइजेशन ओके राइट आंसर ऑप्शन 2 रहिबो बहुत गुडे सुनिल ओके नेक्स्ट बा the which material used predominantly used for constructing the foundations of most buildings of Dholavira site in Harappa architecture. कौन रहेगा bricks, stones, granite and sandstones. कौन रहेगा सुनील मंजरी and नारायण नाहक. जदि कटाकटी ही तुम एति करूछो हला आ जदि कटाकटी करना तुम एति आसो माने कोन कहले हेई जीवो विश्वास रखो हला ओबीसी रो मु प्रेडिक्ट करूची कि जनरल कैटेगरी रो 80 टू 85 भीतर जाई पारे हला 80 75 टू 80 भीतर जाई पारे हला प्लीज समस्त को भी लाइक टे शेयर टे सब्सक्राइब टे कर दियो ओके नारायण एंड प्लीज शेयर हम रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टे शेयर टे करनी तो फ्रेंड्स मानको ओके नहीं देखो इट इज स्टोन हला इट इज मेड ऑफ स्टोन हला मन रखो इट इज मेड ऑफ स्टोन धोलाबेरा साइड एंड हरवा साइड मेड ऑफ स्टोन्स ओके इट इज नॉट ब्रिक ना धोलाबेरा जोरे इंडिया पाउतले है ना who founded the Palo dynasty in the Bengal region of India? Okay, who founded the Palo dynasty? Okay, किए फाउंड करथिला Palo dynasty इंडिया रे? Okay, रामपाल, मिहिर कुल एंड गोपाल एंड महिपाल महिपाल कौन रहिबो राइट आंसर मंजरी नारायण एंड सुनील देखो राइट आंसर है गोपाल ओके हु फाउंडेड द पालो डायनेस्टी इट इज गोपाल हु फाउंड पालो डायनेस्टी इट इज गोपाल फाउंड ओके मन रखितो ना सिग्निफिकेंट ऑफ द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज टीम फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इट एंश्योर द वोटिंग राइट्स इट ग्रांट guarantees rights regarding property and it allows the employment right it ensures citizens can petitions court to enforce their fundamental rights कौन रहिबो मेंस पे तुम तैयारी आरंभ कर दियो नारायण हला मेंस पे आरंभ कर दियो तैयारी ओके एथरो आउ टिके अधिक दबो जनवरी राउ थरे बाहर जे आरआई परीक्षा तो समस्त टिके तत्पर था ना आउ जो माने केंद्रीय विद्यालय पे जो माने नॉन टीचिंग पोस्ट पे अप्लाई करे चाहू तो से माने भी अप्लाई कर दियो नॉन टीचिंग पोस्ट जोटा कि केंद्रीय विद्यालय रो अछि है ना बहुत गुडा पोस्ट अछि खाली अप्लाई लेवल टिके अधिक होछि होला कि दिन अप्लाई पैसाला हला ना देखो राइट आंसर ऑप्शन 4 इट एंश्योर सिटीजंस कैन petition court to enforce their fundamental rights okay option 4 बहुत बड़ा नारायण okay मंजूरी सुनी ले देखो which of the following was a key feature introduced by the 42तम constitutional amendment act 1976 की फीचर कौन रहउची 42तम constitutional amendment act रो limiting the power of the parliament strengthening judicial review dilatation of DPSP and the amro kono insertion of one socialist and secular in the preamble हाई प्राइस हाँ बरा सर नॉन ये बहुत बेसी अछि हमें अरे तुम हारी गलो किए कहला अरे देखो यार तुम कौन डिमोटिवेट होचो है डिमोटिवेट कहीं होचो अरे गोटे कबाड़ बंद ने सातरा कबाड़ खोला रहउछो ओके तो व्हाई यू आर वरीड अबाउट इट ओके तुमको कलेक्टर होवार अछि तुमको कलेक्टर जदि होवार अछि तुमको चपरासी चाकरी मिलिबनी सेही प्रकार कथा हो ना नहीं यदि कलेक्टर होवार अछि चपरासी चाकरी मिलिबो नहीं हो ना नहीं हाई ऑलवेज ड्रीम हाई ओके सब हाई ड्रीम कर हला
ऑप्शन 4 रो राइट आंसर है इंस्टेड ऑफ वर्ड सोशल सेक्युलर इन द प्रीएम्बल बॉडी सम कम्युनिटी मिला ना हाँ बस जी पढ़ुची से उठुची ना नहीं जी देखो गोटे जिनस मु कहि दउची 5 मिनिट रो 5 मिनिट 2 सेकंड दियो देखो रास्ता सबुबले कोन हमर कोन नेशनल हाईवे गुडा कोन प्लेन थाई कि ना नहीं सब नेशनल हाईवे भी भल थाए हम जदि किए जदि देखि दियो नेशनल हाईवे भी खाल ढेप थाए ना नहीं तो सेही प्रकार कथा पढ़ तो लगी रही जदियो गोटे मु कहिबी कि जदि तुमे कोन करछो कि चेष्टा कलो प्रथमे दीटा भाग कर दो पेपर रे तुमे फलाना परीक्षा देछो एतिकी सब्जेक्ट तमरो अछि एतिकी रे तुमे वीक अच्छो एटारे एंती करियो एटा स्ट्रेंथ अछि एटा वीक अच्छो एटा स्ट्रेंथ अछि एटा वीक अच्छो एटा स्ट्रेंथ अछि हला जेटा स्ट्रेंथ अछि सेटा को मिनिमम एफर्ट दो जोटा कि वीक अच्छो सेटा को मैक्सिमम एफर्ट दो ओके केमिति होबनी मु देखिबी है ना केमिति होबनी मु देखिबी ओके तो सेटा पे देखो हला गोटे चार्ट बनाओ कि सब्जेक्ट लो कोटा वीक अछि एटा गोटे चार्ट बनाओ ए टाइप रो पेपर रे है ना कोडर वीक अच्छो सेटा को काम कर हला मन रखो है ना मेक इन इंडिया इज राइट आंसर कोन देखो तो फॉलोइंग इनिशिएटिव वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 2014 to boost the industrial sector by making India a global manufacturing hub कोन रे एटा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ओके ऑप्शन कोन रे बाबन आसी पर मंदिर हां मेक इन इंडिया ओके मेक इन इंडिया इज राइट आंसर है मन रख दो नेक्स्ट बा as per the economic survey 2024-25 what is india's global rank for export in telecommunications computer and information services okay इकोनॉमिक सर्वे अनुଯାयी व्हाट इज द इंडिया से ग्लोबल रैंक इंडिया रैंक केते रहुची टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सेक्टर रे फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट कोन रहबो सुनील एंड मंजरी मेक इन इंडिया यस यस अच्छा नारायण एटा कोन राइट आंसर सुनील एंड मंजरी देखो राइट आंसर सेकंड रहबो हला सेकंड रहबो इंडिया रैंक सेकंड हला नेक्स्ट देखो देखो who has been appointed as the new chairperson of national human rights commission NHRC डिसेंबर 2024 रे NHRC के अपॉइंट हेतले ओके जस्टिस विद्युत रंजन सरंगी भरत लाल एंड जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम एवं प्रियंका हानुंगो मंजरी सुनील नारायण इट इज वी सुब्रमण्यम वाला ऐसे राम सुब्रमण्यम वी राम सुब्रमण्यम राइट आंसर ओके नहीं देखो जनवरी 2025 व्हिच मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस द न्यू पासपोर्ट रिन्यूअल प्रोसेस फॉर ट्रांसजेंडर सिटीजंस पोस्ट सर्जरी अवार्ड ओके अब्रॉड सॉरी अब्रॉड अब्रॉड कहले अब्रॉड ओके कौन रहबो जनवरी 2025 व्हिच मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस द न्यू पासपोर्ट रिन्यूअल प्रोसेस ओके न्यू पासपोर्ट रिन्यूअल प्रोसेस फॉर ट्रांसजेंडर सिटीजंस post surgery abroad okay कौन है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर नारायण मंजरी एंड सुनील मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स ट्रिपल वन देखो राइट आंसर यस अरे यार नारायण गोटे कथा देखो कि मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स हमर पासपोर्ट से रिलेटेड था तो गोटे लॉजिक धरी चलो तो एटा ही राइट आंसर वाला बहुत बड़ा मंजरी बहुत बड़ा राइट आंसर ओके है ना देखो हु अमंग द फॉलोइंग टुक चार्जेस एज द सेक्रेटरी ऑफ DARE एंड डायरेक्टर जनरल फॉर इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च है ना अप्रैल 2025 ओके मंगाई लाल जाट एंड वी नारायण मान्य शर्मा एंड देखिबा शिव कुमार कल्याण रमन सर राकेश गुड मॉर्निंग राकेश 11 बजे शुरू होता है तुम टाइम कितना हुआ 12 बजे आ गए क्या जी अच्छा अच्छा ନାଇଁ ବାହାରେ ପଢୁଥିଲି ବାହାରେ ବାବା ବାହାରେ ପଢୁଥିଲି ଓକେ ତ ଡୋଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପାଠ ପଢ ହେଲା ଦେଖ ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ରହିବ मंगाई लाल जाट ओके मंगाई लाल जाट से कौन अच्छे पता डायरेक्टर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ओके मंगाई लाल ओके मन रखिथ Next, the Ministry of Electronics and Information Technology (MIT) okay hosted India's first nano electronic roadshow 27 March 2025 at which of the following institution okay कहाँ से तो है ना मिसी को hosted ना Ministry of Electronic Information Technology (MIT) है ना hosted the India's nano electronic roadshow March at which of the following institution कौन institution है okay IISc Bangalore IIT Madras IIT Kharagpur IIT गुवाहाटी
ऑप्शन ए आईआईएससी बेंगलुरु ओके आईआईएससी बेंगलुरु ओके सारथी को लोक भूली गले ना सेति पे से मन पकोछंती ओहो सीनियर सीनियर कार्नाटिक वाइल वोकालिस्ट के है ना ओमान कुटे अम्मा हला हु वाज ऑनर्ड विद द पद्मश्री 2025 हेल्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी ओके है ना ओमाना कुटे के ओमाना कुटे अम्मा ओके हु वाज ऑनर्ड विद द पद्मश्री अवार्ड को स्टेट रो से बिलोंग करंती अथवा यूनियन टेरिटरी लखा है स्टेट से ओके आंध्र तेलंगाना कर्नाटक केरला मंजूरी सुनील एंड राकेश एंड अजून किए रहितले नारायण देखो राइट आंसर कौन केरला इज राइट आंसर ओके केरला हो राइट आंसर पिला केरला who was honored with the Best Actress Award at the 97th Academic Award 2024 Best Actress Award for the 97th Academic Award 2025 ने डेमी मोरे माइकी मेडिसन एंड सेंथिला एरियो एंड फर्नांडा टोरेस हाँ मु भी गेस करछि सेति भितरे जीव बोली हला सेटा काम मान कर जीव ओबीसी एससी एससीबीसी अथवा जनरल को मान जीव तुम प्रेडिक्ट करछो कहलो देखियो बहुत पिला कम मार्क मु भी कहती बहुत पिला कम मार्क आनते बहुत पिला कम मार्क आनते ओके देखो राइट आंसर कर दे माइकी मेडिसिन ओके माइकी मेडिसिन इज राइट आंसर ऑप्शन 2 इज राइट आंसर बहुत बड़ा मंदिर ओके नेक्स्ट एज फॉर द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 व्हाट वाज द रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द अप्रैल डिसेंबर 2025 केते रहिबो हला 51 5.1 6.3 4.2 4.9 ओबीसी रो एते कम जियो बुझ हेले तो भलो कथा है ना बहुत पिला पाई जे प्रीलिम्स अपियर हे जो माने अपियर हेते मेंस पे अपियर हे जिवे ओके किंतु ता सहित भी आउट जिंस रहउछि कि समस्त टिके ये लबडे हला नॉर्मलाइजेशन होती बहुत बुढ़ा अछि हला देखो एटा 4.9 हला 4.9% रे हला बहुत बुढ़ा मंदरी नै जिबा व्हाट इज द एलोकेशन ऑफ खेलो इंडिया स्कीम इन द यूनियन बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 इन 26 allocation for the Khelo India scheme in the union budget for the financial year 25-26 1000 कोटी 240 कोटी 100 कोटी 430 कोटी देखो 1000 करोड़ बहुत बड़े सुने थे ना 1000 करोड़ इज राइट आंसर ओके ऑप्शन 1 इज राइट आंसर ओके अप्रैल 2000 यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ लॉन्च द नेशनल जीरो Marcellus Raultel MR जोड़ा की कहा and elimination campaign to achieving the goal eliminating the Marcellus and Rubella by 2026 35 30 28 कौन रहबो है ना जोड़ा MR गोटे जो अछि सेटा को एलिमिनेट करे नेट जीरो नेशनल जीरो यू नो Marcellus Rubella जोड़ा ये होछि केते तारो प्रेडिक्ट टारगेट रखिछन से माने ओके It is 2026 सुधा ला 2026 सुधा एटा को इराडिकेट कर दे मन रख दला in which month did the union government introduce the draft national sports governance bill 2025 for public consultation okay कौन रहबो which month did the union government introduce the draft national sports governance bill 2024 for public constitution है ना consultation मई अप्रैल अक्टूबर जनवरी October over right answer plan October over right answer October है ना which type of engine is the Indian Space Research Organization working on for its future launch vehicle in 2025 okay hydrogen peroxide engine hybrid solid engine semi cryogenic engine electronic propulsion engine मंजरी रेड्डी सुनील कौन रहबो राइट आंसर यार देखो सेमी क्रायोजेनिक इंजिन रे राइट आंसर ऑप्शन 3 ओके सेमी क्रायोजेनिक इंजिन ऊपर काम करछि 2025 रे इसरो ओके इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द यू विन पोर्टल लॉन्च इन द नेशनल वाइड 2024 ओके 2024 रे
यूविन गोटे पोर्टाल लॉन्च हेतला तार कोन रोची ना मेन फंक्शन कोन रोची मेडिकल इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन digitalization of vaccine records online hospital appointment system family health records stored कोन सर सीआई राजन इंजिन कोन टिके कहिबे कि अच्छा मु ता इंजिन ऊपर नॉलेज नहीं किंतु जदि कहूच माने मु तार क्लास नहीं के आसबी है ना गोटे बहुत छोटिया क्लास 10-15 मिनट नहीं के आसबी डिफरेंट डिफरेंट इंजिन है ना लॉन्च व्हीकल्स इंजिन है ना एक गुडा मु गोटे क्लास नहीं जीवी है ना तो डोंट वरी अबाउट इट है ना देखो राइट आंसर हो इट इज यू विन इट इज अ डिजिटल वैक्सीनेशन रिकॉर्ड बहुत बढ़िया मंदिर है ना डिजिटल वैक्सीनेशन रिकॉर्ड एटा गुटे है AI Action Summit held in February 2025 was co-chaired by the leader of which of the two countries? Okay, AI Action Summit would hit February मास 2025 रे co-chaired by the leader of which country? दुई जन लीडर थिले कोन रहबो पिला है ना कनाडा ऑस्ट्रेलिया फ्रांस इंडिया जर्मनी जापान यूनाइटेड स्टेट यूके देखो फ्रांस एंड इंडिया को होस्ट करथि दिजो मिस होस्ट करथले एआई एक्शन समिट है ना एआई एक्शन समिट 2025 फेब्रुआरी हैला मन रखितवा नै जिबा व्हिच डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज्ड द फोर्थ एलजी हाउस पोलो कप 2024 टूर्नामेंट ओके डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स यूनियन टेरिटरी लद्दाख डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म यूनियन टेरिटरी लद्दाख मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड लद्दाख पोलो एसोसिएशन हाँ अच्छा आउ गोटे जिनस कि आईबी जो रही इंटेलिजेंस ब्यूरो तार मल्टीटास्किंग स्टाफ रो बाहर है ना तो समस्त सेटा पई टिके तत्पर था है ना मल्टीटास्किंग स्टाफ ताते गोटे जिनस होची करंट अफेयर्स को बहुत फोकस कर जो आईबी पई प्रिपेयर होची इंटेलिजेंस ब्यूरो पई बहुत रेपुटेड जॉब सेटा इंटरनल सिक्योरिटी पई काम करे इंडिया रो है ना ता सहित बहुत गुडा जिनस रहउची जेमति कि जीएस पार्ट किसी देखलो रीजनिंग टाको बहुत प्रैक्टिस करो सेटा रे ना करंट अफेयर्स ओके देखो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस स्पोर्ट्स एंड यूनियन टेरिटरी लद्दाख ओके एटा रहबो राइट आंसर ओके सार 650 30 ए ता अरे सेटा तो सेटा मु एम्स रो गोटे देखुतली हला एम्स रो नॉन तांकर प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल जॉबडा 3000 टका अप्लाई फीस 3000 3000 टू ओइटा होची जनरल कैटेगरी पई एससी एसटी पई रहउची 2400 ना कोन हला 2400 ओके तो भाबो केते टका अप्लाई फीस माने कोन सैलरी किंतु भलो अछि हला सैलरी भलो अछि अप्लाई फीस जो एति रहउची क्राइटेरिया मु भी आश्चर्य हला सीटीटी रो भी अप्लाई देखो केते टका ना ऑन द यूनियन बजट 2025 न्यू मखाना बोर्ड इज टू बी एस्टैब्लिश्ड व्हिच इंडियन स्टेट under the union budget 2025-26 a new makhana board is to be established in which indian state jharkhand assam uttar pradesh bihar यार थोड़े थोड़े फील होची अरे भाई देखो सुनो सुनो कौन सी ये को निंदा करो नहीं कि ये कहीं नहीं कहीं कारण कि समस्त किसी ना किसी दुर्बलता रही है आजिकल मु बहुत गुटे जगह बुली एंटायर ओडिशा मु कथा कहि केवल ये बहुत आज मत एमती लोक अच्छे जो मैंने डेप्राइव अच्छा शिक्षारू निजर बेसिक नीड्स जो रोचे से गुटा दूरे अच्छा है ना तो जदियो से प्रिविलेज मिलूँ से आगू बढ़िया बोली जो मान गाँव को एवं इलेक्ट्रिसिटी नहीं कि रास्ता भी नहीं है ना तो से भावी भल कि बीइंग हायर कास्ट तो भल कहीं बिहार में जब देखिए तो एवं से जगह क्लासेस चलते ओके तो बिहार इज राइट आंसर रहा बिहार इज राइट आंसर ओके नै जिबा जनवरी 25 2025 स्टेट declared to 32.78 hectare area of natural inland mangrove site in the Naure village as its first biodiversity heritage site. Gujarat, Karnataka, Haryana, Jammu and Kashmir. कौन रही राइट आंसर पिला 2025 says we declare 32.78 hectare area of natural inland mangrove sites in Goneria village as is first biodiversity heritage site. देखो राइट आंसर पिला गुजरात हम राइट आंसर गुजरात है ना गुजरात मैं जीवा when did the sea phase of tiger trump 2025 take place अच्छा एटा पचार थे क्वेश्चन है ना कोन रिपीट कर दी टाइगर
ट्रायम्फ एक्सरसाइज टू प्लेस हेतला को जगह हेतला किंतु केबे हेतला टिके आगर करा जायछि केबे हेतला एडा 8 12 एप्रिल 15 टू 19 एप्रिल ना 25 टू 29 एप्रिल एंड 7 टू 1 टू 7 एप्रिल 2025 रे हेतला देखो राइट आंसर 8 ରୁ 12 एप्रिल 8 ରୁ 12 एप्रिल नहीं जीवा इन exercise of power conferred by the clause 2 of the article of the constitution of India has president appointed CGI देखो देखो पिला क्वेश्चन टा कोन पतला देखो आर्टिकल केते अनुसार ए सब ड्रामा लिखा जी बोला आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रेसिडेंट अपॉइंटेड सीजीआई ओके को आर्टिकल द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करा जाए है ना को आर्टिकल द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करा जाए एटा रहला क्वेश्चन किंतु तुम जो ऊपर देखि छानिया जो इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय द क्लॉज 2 ऑफ द with the article of the Indian Constitution appointed the president appointed by the CGI okay এই টাইপ অফ কোশ্চেন কোন রহিব এটা পিলা ডরিং নথিব আর্টিকল 124 ইজ রাইট आंसर है सो है ना 124 अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ओके वर्तमान जे नुआ हेचन 2 दिन तले सीजेआई तांको नाडा कमेंट बॉक्स रे लिखो ओके what is the primary goal of zero based budgeting JBB what is the primary goal of zero based budgeting JBB okay to track only past expenses to increase tax revenue to justify all expenditures from scratch and to link revenue with exports your right answer कौन है बेला to justify all expenditures from scratch okay what is the primary challenge faced by the nation in the conserving their biological wealth okay कौन रहउछि चैलेंज जो फेस करछन नेशन वाइड कि बायोलॉजिकल वेल्थ को कंजर्व करिया पई ओके कौन इनसफिशिएंट फंडिंग लिमिटिंग पब्लिक अवेयरनेस conflicting between development and conservation and lack of scientific knowledge the conflict between development and conservation conflict between conservation and danger conservation is the right answer next ba what is the primary aims in the market stabilization scheme MSS okay कौन primary aim रहुछि market stabilization scheme the to curb inflation using CRR operations to absorb excess liquidity through securities to manage fiscal deficit with bond salaries to control long term inflow via forex trade the right answer to absorb excess liquidity through security है कौन है जी एम कौन मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम रो फॉर्म कौन होती absorb excess liquidity through securities okay next one thank you for participating in the class मंजरी सुनील केवी और एनकेवी रो नॉन टीचिंग पे अप्लाई करिवि कि सर अच्छा तुम जदी अप्लाई कर मना नहीं किंतु प्राइस टा बहुत होथिला सर अप्लाई फीस टा अधिक अछि आ सेटा पे जदी करो देन लागो हला बहुत प्राइस अछि तार है ना देखो लागो जदी तमे अछि किंतु बहुत प्राइस थिबा दु बहुत पिला अप्लाई न कर पारंती किंतु जदी चेष्टा करो मन अप्लाई करो ओके थैंक यू एवरी धन्यवाद आपन को मूल्यवान सम्मत देथिबार ओके थैंक यू ऑल